The future of low-calorie food is not about dieting. It is a portion engineering. Consumer wants a portion that can satisfy his appetite and maintaining balance like a potion. It is rethinking calories. कई सालों से एक कॉन्सेप्ट है, लो कैलोरी मीन्स रिड्यूसिंग कैलोरीज इन द डाइट. अगर डाइट कंट्रोल नहीं है तो काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज. दिस इज नॉट द वे टू हैंडल इट. कंज्यूमर्स वांट टू हैव ए पोर्शन एज ए पोर्शन विच कैन सेटिस्फाई हिज और हर एपेटाइट. अगर आप फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, न्यू एंट्रेंट्स इन फूड इंडस्ट्री हैं या स्टार्टअप फाउंडर है, देन दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओल्ड थिंकिंग क्या है? रिड्यूसिंग द कैलोरीज मीन्स डाइट कंट्रोल. जबकि मॉडर्न थिंकिंग क्या है? नो रिस्ट्रिक्शन, ओनली सेटिस्फाइंग द एपेटाइट. कंज्यूमर्स स्टिल वांट टेस्ट, they still want convenience and also want to satisfaction from the food they eat. This is where the thinking is changing. Low calorie food means designing food in a way that satisfies appetite without excessive calorie load. Food engineers, food technologists and product developer के लिए this shift is very important. It means control on oil absorption, portion size, and product structure. It means smarter food design. The future of low-calorie food is not dieting. It's an intelligent food design. This is the 4th episode of our Future Food Thinking series, where we explore how consumer expectations shape food processing technologies. At Procon Ventures, we believe in value creation, not just value addition.